Parliament debates Vande Mataram. The missing stanzas spark fierce war. The 1937 version adopted by Congress. A song written for Indian nationalism. What stanzas were cut in 1937 and why? Hello and welcome to this important episode of Explained by NewsX with me, Uday Pratap Singh. A 10-hour debate raged in Parliament on the 150th anniversary of Vande Mataram, with the Prime Minister questioning as to why the national song was butchered despite it being a symbol of unity and hope for Indians during the British Raj. The Prime Minister went to read missing stanzas in Parliament. Which stanzas did the Prime Minister omit? Well, we'll tell you more about that, but first let's go back in history to tell you what happened 150 years ago. The song was written and composed by Bankim Chandra Chatterjee in 1875 and first published in the literary journal Bangadarshan. It's generally believed that the concept for Vande Mataram came to Bankim Chandra Chatterjee while he was still working as a government official. Around the same time, the administration was trying to promote God Save the King as the anthem for Indian subjects, which Indian nationalists disliked. Bankim Chandra Chatterjee later included the song in his 1882 book Anand Mat, set in the same events of the Sannyasi rebellion, the first major anti-British independence struggle in India. The colonial government went on to ban the book and make the recital of the song in public a crime. Born in June 1838 to an orthodox Bengali family in Nehati, Bengal Presidency, Bankim Chandra Chattopadhyay was a key figure in literary renaissance of Bengal as well as the broader Indian subcontinent. The author held a degree in arts as well as law. Before joining the subordinate executive service, he also went on to become deputy magistrate and deputy collector before retiring from government service in 1891 when he received the title of Rai Bahadur. The nationalist author penned 14 novels and many serious serocomic, satirical, scientific and critical treatises in Bengal. In fact, he is known as Sahitya Samrat, or the Emperor of Literature in Bengali. The depth of his influence can be felt if you take a look at his contributions to the Indian freedom struggle, as well as his role in creating nationalist symbols that are used to this day, such as the image of Bharat Mata, Vande Mataram, the hymn to the motherland, Anand Mat, the novel that inspired generations of freedom fighters, as well as his reinterpretation of the Bhagavad Gita that strongly influenced nationalism. Vande Mataram, in fact, became such an important part of the freedom struggle that it was adopted by the Republic of India as its national song in 1950. First gaining political significance after being recited by Nobel laureate Rabindranath Tagore at the Calcutta Congress session in 1896. The song became popular amongst political activists and freedom fighters as a marching song by 1905. Composed in Sanskritized Bengali during a spontaneous session by Bankim Chandra, musician and composer Jadunath Bhattacharya was asked to set a tune for this poem just after it was written. The first translation of Bankim Chandra Chattopadhyay's novel Anandamat, including the poem Vande Mataram, into English by Naresh Chandra Sen Gupta. The poem is an ode to the motherland, personified as a mother goddess. Literally translating to I bow to thee, mother. Let's first take you through the meaning behind the first two stanzas of the poem that were later adopted as India's national song. The first two verses of the song go as follows. Mother, I bow to thee, rich with thy hurrying streams, bright with thy orchard gleams, cool with the winds of delight, dark fields waving, mother of might, mother free, glory of moonlight dreams over thy branches and lordly streams, clad in thy blossoming trees, mother, giver of ease, laughing low and sweet. Mother, I kiss thy feet, speaker sweet and low. Mother, to thee I bow, who hath said thou art weak in thy lands. When the swords flash out in 70 million hands and 70 million voices roar thy dreadful name from shore to shore. With many strengths, who art mighty and strong, to thee I call mother and Lord. Thou who savest it, arise and save. To her I cry, whoever her foemen drove back from plain and sea and shook herself free. The sheer emotion evoked by these lines may provide some insight into why it became one of the most popular songs of protest during the Indian independence movement. Although the recital of the song was banned by the colonial government, many activists were imprisoned by the colonial government for disobeying the order. However, that did not deter workers and general public from repeatedly violating the ban, many times by gathering together in the presence of colonial officials and singing it. Popularized by Rabindranath Tagore, who recited it at the Calcutta Congress session held at Beaton Square in 1896, the song went on to be adopted and popularized by many prominent figures. Apart from Tagore, Dakina Charan Sen sang it 5 years later in 1901 at another session of the Congress at Calcutta.
Poet Sarla Devi Chaudarangi also sang the song in the Banaras Congress sessions in 1905. Lala Lajpat Rai, another hero of the Indian freedom struggle, started a journal called Vande Mataram from Lahore. Hiralal Sen made India's first political film in 1905, which ended with a popular chant. Indian revolutionary Mang Tangini Hazra's last words as she was shot to death by the Crown Police were Vande Mataram. In 1907, when Bhikaji Kama created the first version of India's national flag, it had Vande Mataram written on it in the middle band. Looking at the way the song was intertwined into the Indian freedom struggle, not just by a few but by seeping into the nation's consciousness, one cannot help but wonder why the song did not become India's national anthem. Mahatma Gandhi supported the adoption and singing of the Vande Mataram song and said in a speech given in Guwahati, Assam in 1946, that Jai Hind should not replace Vande Mataram. Gandhi reminded everyone present that Vande Mataram was being sung since the inception of the Congress. He supported the Jai Hind greeting but stated that it should not mean the exclusion of Vande Mataram. The Mahatma was concerned that those who discarded Vande Mataram, given the tradition of sacrifice behind it, would one day discard Jai Hind also. However, controversy over the song soon emerged. From the outset, some sections of the Muslim community objected to the song, viewing its portrayal of India as Hindu goddesses as idolatrous and incompatible, in fact, with Islamic monotheism. Leaders like Muhammad Ali Jinnah and the Muslim League argued that it promoted Hindu nationalism over a secular ideal. These objections peaked in the 1930s during the push for independence. In 1937, parts of the Vande Mataram, which was chosen as the national song in 1937 by the Indian National Congress as it pursued the independence of India from colonial rule. A committee consisting of Maulana Azad, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Acharya Dev and Rabindranath Tagore recommended the adoption. However, keeping in mind the objections being raised, the song was adopted with a compromise. According to the gathered leaders, including Nobel laureate Rabindranath Tagore, though the first two stanzas began with an unexceptional evocation of beauty and motherland, in later stanzas there are references to the Hindu goddess Durga. Thereafter, with the support of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru, the Indian National Congress decided to adopt only the first two stanzas as the national song to be sung at public gatherings, and other verses that included references to Durga and Lakshmi were expunged. Today, the Prime Minister recited the omitted stanzas of the iconic verses removed in 1937 to highlight their historical significance and the spirit of the original compensation. Let's listen into the stanzas read out by him, the rebuttal then given by Priyanka Gandhi Vadra in Parliament, and then we will decode its literal translation. वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें, और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। So what was in the stanzas that were read out by the Prime Minister? The deleted stanzas read as follows: Thou art wisdom, thou art law, thou art our heart, our soul, our breath. Thou the love divine, the awe in our hearts that conquers death. Thine the strength that nerves the arm, thine the beauty, thine the charm. Every image made divine in our temples is but thine. Thou art Durga, lady and queen, with her hands that strike and her swords of sheen. Thou art Lakshmi, lotus-throned, and the muse 100-toned. In a letter to Muhammad Ali Jinnah, Nehru elaborated on the committee's decision to remove the above stanzas. Nehru stated, first of all, it has to be remembered
that no formal national anthem has been adopted by the Congress at any time. It's true, however, that the Vande Mataram song has been intimately associated with Indian nationalism for more than 30 years, and numerous associations of sentiment and sacrifice have gathered round it. Quote unquote. Nehru went on to say when some objections were raised, the working committee considered the matter and decided that certain stanzas which contained certain allegorical references might not be used on nation platform or occasions. The two stanzas that have been recommended by the working committee for use as a national song have not a word or a phrase which can offend anybody from any point of view, and I am surprised that anyone can object to them. They may appeal to some more than to others, some may prefer another national song, and they have full freedom to do so. When India gained independence in 1947, the country needed national symbols. The stanzas making reference to goddess Durga and goddess Lakshmi led to a fierce debate in the Constituent Assembly. While some argued that Vande Mataram had earned the right through its role in the freedom movement, others felt that Jana Gana Man, written by Rabindranath Tagore in 1911, was more inclusive and universal. Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister, reportedly supported the adoption of Jana Gana Man as the national anthem, saying India's anthem must unite, not divide. Finally, on January 24, 1950, just 2 days before India became a republic, the Constituent Assembly, under Dr. Rajendra Prasad's presidency, formally adopted Vande Mataram as the national song of India. Dr. Rajendra Prasad asserted during the session, the song Vande Mataram, which has played a historic part in the struggle for Indian freedom, shall be honoured equally with Jana Gana Man and shall have equal status with it. In recent years, Vande Mataram has occasionally resurfaced in political discourse, debated over issues of nationalism, identity and secularism. However, from the dusty lanes of colonial Bengal to the global stage of independent India, Vande Mataram continues to remain a symbol of sacrifice, courage, as well as unity. As we mark the 150th anniversary of Vande Mataram in 2025, the debate still continues. The Prime Minister has raised a pointed question: why was this symbol of unity and hope during British rule removed? The Congress fired back, asserting its role in declaring Vande Mataram national song of India. The argument revolves around secularism versus nationalism. But the real question is, do we let our past define us or learn from it to shape our evolving future? Well, we leave you with a thought to ponder over. Parliament debates Vande Mataram. The missing stanzas spark fierce war. The 1937 version adopted by Congress. A song written for Indian nationalism. What stanzas were cut in 1937 and why? In fact, joining us now is Sajal Chatterjee, great-grandson of Bankim Chandra Chatterjee, to discuss the 150-year anniversary of the Vande Mataram in further details and this debate in Parliament on it as well. Thank you for being with us. What stories have you heard about your great-grandfather? Why did he write the Vande Mataram? Mr. Chatterjee. देखिए, वंदे मातरम एक राष्ट्रगीत है, ये तो सब जानते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, पूरा भारत भी जानते हैं, ये राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम जब पार्लियामेंट में गया, उस टाइम तो जनगण मन भी गया था, जनगण मन को नेशनल एंथम कर दिया गया, ठीक है। तो इसको जब पार्लियामेंट में दिया गया, उस समय सर जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना के बात सुन के इसको बैंड कर दिया गया। जिन्ना ने बोला कि इसमें ये पूरा गाना है, इसके अंदर हिंदू का जो देवताओं है, सबका नाम है, इसको बंद करना चाहिए। तब बंद हो गया था, इसीलिए पूरा हो नहीं रहा था। तो दो स्टेंजरा होता था जहां तक हिंदू देव देवी का नाम नहीं है। और वंदे मातरम तो लिखा हुआ था हम लोग का जो फ्रीडम फाइटर है, उन लोगों के लिए लिखा था। What is that one thing about your great grandfather that the young generation of India should know, Sajal? देखिए, एक्चुअली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत का पहला ग्रेजुएट है जी। सबसे बड़ा बात यही है। दूसरा बात है, जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नौकरी करते थे मेरा दादाजी, उस समय ब्रिटिश को भी दबा के रखे थे, इसीलिए ब्रिटिश कोई जगह में उसको 1-2 साल के ज़्यादा रखता नहीं था। आदमी लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको नौकरी से निकाल दिया, लेकिन निकला नहीं, उन्होंने नौकरी छोड़ दिया था। ब्रिटिश का जो ये बांग्ला में तो बात है ताबेदारी, ब्रिटिश के अंडर वो काम नहीं करेंगे, ब्रिटिश का बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए नौकरी छोड़ दिया था, नौकरी छोड़ के बैठ गया था। और देश का ये बात जानना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को ये बात इसीलिए जानना चाहिए, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को जानना जरूरी है,
ऐसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को भी जानना जरूरी है। रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर बहुत काम हो रहा है, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, इसीलिए कोई जान नहीं पाते हैं। वो तो बांग्ला भाषा का एक तो समुंदर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो उसको तो जानना चाहिए, जिसको बांग्ला भाषा का गुरु कहते थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप लोग शायद जानते नहीं है, जो 5 नंबर प्रताप चैटर्जी स्ट्रीट कलकत्ता में है, जिस वासभवन में बंकिम बाबू का देहांत हुआ, वो भवन में रविंद्रनाथ टैगोर कोई भी किताब लिखते थे, कोई भी कुछ भी लिखते थे कि एक बार जाके मेरा दादाजी के पास दिखाते थे, बंकिम बाबू के पास आते थे, बंकिम बाबू देख के उसको सर्टिफाई करते थे। ये कोई वो बहुत आदमी नहीं जानते हैं, जो पढ़ाई लिखाई किया है बंकिम को लेके वो लोग जानते हैं, जो लोग रिसर्च किया वो लोग जानते हैं। तो देखिए इसी वास्ते तो बंकिम बाबू को नेक्स्ट जनरेशन जितना दिन दुनिया रहेगा उतना दिन बंकिम बाबू को भी रहना चाहिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, जैसे विद्यासागर है, तो रहना चाहिए। And how does it make you feel when the Prime Minister Sajal himself makes an effort to educate people about Bankim Chatterjee's contributions? जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर बोलते हैं देशवासियों को। प्राउड हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो पहले होना चाहिए था वो अभी हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो किए हैं उसको मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से एकदम नमन कर रहा हूँ, उसको प्रणाम कर रहा हूँ। हाँ, उसको क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ बोलने का भाषा नहीं है, प्रधानमंत्री को क्या बोलेंगे, इससे अच्छा दिन और क्या हो सकता है। आज प्रधानमंत्री साहब ने जो किए हैं वो तो पहले ही होना चाहिए था, ये हुआ क्यों नहीं, ये तो मेरा प्रश्न है, ये तो मेरा क्वेश्चन है। आज मोदी जी ने जो किया है तो बहुत पहले होना चाहिए था। ये तो हक है, बंगाली जाति का हक है, हिंदू का हक है, एक्चुअली भारतीय हर आदमी का हक है बंकिम को जानना, बंकिम को पढ़ना, बंकिम को लेकर रिसर्च करना, बंकिम क्या किया है, क्या नहीं किया है, इसको तो जानना चाहिए। वंदे मातरम क्या है, उसके अंदर लिखा क्या है, ये पूछने का कोई दरकार नहीं है। प्रधानमंत्री साहब ने जो किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो किया, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूं मेरे तरफ से और मेरे पर वो लोग जो कहते हैं कि एक धार्मिक गीत है, द वंस हु से इट्स अ रिलीजियस सॉन्ग, उनको क्या कहेंगे आप? जो लोग कहते हैं वो लोग पॉलिटिकली कहते हैं, कोई आम जनता इसे नहीं कह सकते। एक ठो कास्ट है, वही कास्ट के लिए जिन लोगों का माथा खराब हो जा रहा है, वो कास्ट के लिए जिन लोगों का माथा खराब हो जा रहा है, वही लोग बोलेंगे, दूसरा कोई लोग नहीं बोलेंगे। ये तो एक ही तो कास्ट है जिन्होंने नहीं चाहता कि ये वंदे मातरम गाना हो, वंदे मातरम पूरा जो है, पूरा स्टेंजा जो है वो पार्लियामेंट में बोला जाए। जो एक ही तो कास्ट है, और वो कास्ट को जो लोग प्रायोरिटी देता है वो लोग ही चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। Do you believe we've done great disservice to Bankim ji through these controversies over Vande Mataram? क्या आपको लगता है ये गलत है? जरूर है, ये तो कंट्रोवर्सी होना ही नहीं चाहिए जी। अरे भारत तो पहले तो हिंदू लोगों का देश है। हम लोग बोलते हैं हम भारतीय हो, हम लोग हिंदुत्ववाद है, हम लोग जातीयतावाद है, बाद में तो सेकुलरिज्म है, ठीक है, वो छोड़िए, लेकिन हिंदुत्व जो है, भारत को जो लोगों ने स्वाधीन किया है, तो उन लोगों का भाषा है। आज जिन लोगों के चलते हम लोग चलते फिरते हैं, बात करते हैं, घूमते फिरते हैं, ये तो उन लोगों की भाषा है। ये भाषा तो भारतीय का हर आम आदमी का मन में घुसना चाहिए, मुंह से बोलना चाहिए, कोई भी कास्ट का हो। जो लोग पॉलिटिक्स करता है वही लोग ही इसको लेके पॉलिटिक्स करता है, ये गाने के लोग पॉलिटिक्स करता है। वो लोग चाहते हैं कि वो कास्ट अगर हमारे अगेंस्ट चला जाए तो हम लोगों को दिक्कत होगा। जो लोग चाहते हैं कि ये कास्ट अगेंस्ट जाने से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, वो लोग इसको सामने ले आए। How should we end the confusion and politics over Vande Mataram, Sajal? 150 साल बीत गए हैं इस गीत को लिखे हुए, मगर अभी भी विवाद जो है वो जारी रहता है। This must end so that the patriotic thought behind the song is known to every individual in India. Sajal. ये कन्फ्यूजन खत्म करने का एक ही रास्ता है। मोदी जी जो
जो काम कर रहा है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप यही है, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इंडिया का पहला ग्रेजुएट है। ये बहुत आदमी लोग नहीं जानते हैं कि पहला ग्रेजुएट कौन है इंडिया का। तो अगर वंदे मातरम को, बंकिम चंद्र को जिंदा रखना है, इसको बंगाली समाज में, भारतीय के अंदर, पूरा वर्ल्ड के अंदर इसको जिंदा रखना है, तो इसके 2-3 तो रास्ता है। देखिए, हम 2 गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बंगाल गवर्नमेंट। पहला ग्रेजुएट जो है, उनके नाम पे कहीं भी, इंडिया का कहीं भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। बंकिम यूनिवर्सिटी एक तो होना चाहिए। हम आपके चैनल के थ्रू सबको बोलना चाहते हैं कि बंकिम यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जैसे रविंद्रनाथ यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, जैसे विद्यासागर यूनिवर्सिटी है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इतना छोटा मोटा आदमी तो नहीं थे जिसके नाम पे यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता। दूसरा बात यही है, बंगाल को हर जगह में रविंद्र भवन है, जहाँ कल्चरल प्रोग्राम होता है, पॉलिटिकल शो होता है, बहुत कुछ होता है। और रविंद्र भवन जैसे सब जगह में है, ऐसे बंकिम भवन भी होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मेरा विनती है, बंगाल गवर्नमेंट से भी मेरा विनती है। अभी तक बंगाल गवर्नमेंट कुछ नहीं किया बंकिम को लेके, कुछ नहीं किया। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, वो तो मैं बोलने का कुछ भाषा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी लीडर जब कलकत्ता आते हैं, बंगाल आते हैं, जैसे इधर का स्टेट प्रेसिडेंट को हमारा खबर तो रखती हैं, छोड़िए, हमारा परिवार का खबर लेते हैं। 2018 में शायद, साल ठीक याद नहीं है, अमित शाह जी आए थे कलकत्ता जी। उन्होंने हमको बुला के अपने पास लेके हमको सम्मानित किया, मंच पे खड़ा करके, आपका वो बिरला सभागार में। हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हमारा परिवार का हालचाल क्या है, पूरा पूछे है अमित शाह जी ने। हमारा गर्व होता है ये बात सोच के, सेंट्रल गवर्नमेंट उतना दूर से आते हुए भी हम लोग का खबर रखते हैं, खबर लेते हैं। लेकिन बंगाल गवर्नमेंट हमारा अपना गवर्नमेंट है, हमारा अपना बंगला का है, हम लोगों का कोई खबर तो नहीं लेता है। जैसे बंकिम बाबू भी नेग्लेक्टेड थे, ऐसे मेरा परिवार भी नेग्लेक्टेड है। और एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किए हैं, आज जो बात बोले हैं पार्लियामेंट में, उसका पूरा होना चाहिए। हम चाहें वो पूरा हो। एवं जैसे आपका जनो मोनो पार्लियामेंट शुरू होने का पहले होता है वोकाली, और लास्ट में होता है वंदे मातरम इंस्ट्रूमेंटली। तो हम चाहते हैं कि पूरा गाना वोकाली बाजे पार्लियामेंट में, या देश के कोने कोने जहाँ वंदे मातरम बाजे, पूरा गाना ही बाजे। ये मैं प्रधानमंत्री से विनती है। उन्होंने जो किया है वो ठीक किया है, सही किया है। मेरे परिवार की तरफ से और एक बार सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और मोदी जी के लिए मेरा प्रणाम। शुक्रिया सजल चैटर्जी हमारे संग जुड़ने के लिए, with your perspective of course on your ancestors song, which of course is the country's national song and is celebrating its 150th year. Thank you indeed, Sajal, for joining us.